right, hi everybody. We are live now. Good morning. How are you स्क्रीन all आपने doing? बंद कर दिया क्या? स्क्रीन शेयर करा था वो क्लोज हो गया? मैं 5 मिनट में दोबारा स्टार्ट करूंगी. एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, ओके फिर नोट्स. गो ऑन. Right. So as I was saying, good morning everybody. Um, my name is Ayushi, and I'll be teaching you AECC. Right. So before we start with our chapters, let us first understand that what is AECC. AECC is Ability Enhancement Compulsory Course. And now, why are you studying this paper? Like, why are you taking 2 hours out of your life and studying this Ability Enhancement Compulsory Course? So let us understand that a bit. कि ये पेपर क्या है, या पेपर आपको क्या सिखाएगा, और आप इसको क्यों सीख रहे हैं, मतलब ये सीखना क्यों ज़रूरी है, राइट? So AECC is about communication. This paper will teach you a lot about communication. Communication के क्या different aspects होते हैं, क्या components involved होते हैं communication में, किस किस type का communication होता है, effective communication कैसे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, बॉडी लैंग्वेज के क्या कंपोनेंट्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो दिस पेपर AECC will cover a lot about communication. तो आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना है? बात तो हम कर ही रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो मतलब हमें आता ही होगा, राइट? सो कम्युनिकेशन इसलिए पढ़ना है और कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जितनी भी ज़िंदगी जिएंगे उसमें जो भी आपका पर्सनल लाइफ होगी और जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, उन सब में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टॉकिंग टू पीपल. या we are social creatures, we need to talk to people, we need to inform, we need to get informed, we need to read, we need to write. We need to communicate to make our careers, we need to communicate to make our relationships. So throughout your life, you will be communicating. And since throughout your life you will be communicating, it's very important to know how to communicate well, right? Because a lot of your professional success, a lot of your personal success will depend on how good a communicator you are. If we talk about professional success, if we talk about professional life, there are so many students of mine who are academically brilliant, but they have a very hard time cracking interviews. They keep getting rejected in interviews, they keep job hunting and they don't get jobs. One reason might be that they are not great communicators. There are so many times where you need to communicate exactly what you are thinking, or you need to be diplomatic, or you need to be very clear, or you need to really express how you're feeling, and you're not able to do that because you don't know how, right? You don't know the nuances of communication, you don't know how to communicate. If we talk about our personal success in our personal lives, the quality of our personal lives is determined by the quality of our relationships, and the quality of our relationships is determined by how we communicate in our relationships, right? Let us take a very small example. For instance, your friend gets a new haircut and comes to you and asks you that, I've got this new haircut, how do I look? Now, you don't really like the haircut, right? But you don't want to hurt the friend. So you cannot say that you look like the stupidest person on the planet. But you also don't want to lie because you're a good friend. So you cannot also say that you look like the prettiest person on the planet, right? You have to be diplomatic. You cannot hurt the friend, but you cannot lie. So there has to be a middle way. Now, how do you communicate diplomatically? So this is something that you need to learn, and that is why learning communication is important, because it determines your success in your personal and professional life. It determines how you talk to yourself and interact with the world around you, right? That is why communication is important, and that is why we are studying this paper, because this paper will teach us a lot about communication, right? So this is all about what is AECC, and
this morning, why did we get up and start studying this paper? That's about that. If we talk a little about communication, I'll just give you a brief intro about communication. I just told you why that is important. We'll talk about what are the different aspects of communication, right? किन-किन तरीकों से आप communicate करते हैं. We'll start with our chapter and we'll talk about, today we'll cover 2 units, unit 1, unit 2. So we'll cover the characteristics of communication, we'll cover the features of communication, we'll cover the types of communication. बहुत टाइप के होते हैं, तो आज हम एक टाइप कवर करेंगे. Verbal and non-verbal communication cover करेंगे. So these are the things that we will be covering. I'll teach you via some notes, and don't worry about taking screenshots, don't worry about scribbling notes, just focus on the lecture. I will give you those notes after the lecture, so you don't worry about that, right? So this was a brief idea about what would we be covering in the lecture. If we talk about communication, तो कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. मतलब आप 4 तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो आप पढ़ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, यू कैन रीड. आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, यू कैन राइट. आप बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो यू कैन स्पीक. एंड आप सुन के कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, राइट? सो यू कैन लिसन. सो reading, writing, speaking and listening, these are the 4 aspects of communication. These are the 4 major ways in which you communicate, right? Now the question arises कि पढ़ तो हम बचपन से रहे हैं, हमने इतना पढ़ लिया कि हम कॉलेज पहुँचे. लिख तो हम बचपन से रहे हैं, हमने इतने एग्जाम्स किए. बोल तो हम उससे भी पहले से रहे हैं. हम तो रोज इतनी बातें करते हैं, और सुनते तो खैर हम हैं ही सबकी. तो जब हमें ये सब आता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो इसको पढ़ना क्यों है थियोरी में, राइट? आई थिंक यू वुड अग्री कि अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से करनी है तो उसको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, राइट? अगर आपको लेट्स से I guess I'm teaching literature students here. You are BA English honors students. So अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और अगर आपको सीखना है किताबें और अच्छे से कैसे पढ़ते हैं, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा, right? You will have to attend a class and you will have to maybe read on it. So my point is that there is an okay way or a bad way to do certain things, and there is like a better way to do certain things. Let me give you an example, right? जैसे for instance, मुझे अगर लिख के किसी की तारीफ करनी है, right? I can write, Jack is a good boy. That is one way of praising somebody. I can also write, Jack is a really good boy. He is so kind and he is so caring towards the people around him. And if you go to his house, he will feed you really good food. He's very, very good at being kind to people, and he's generally an amazing human being, right? So what did I do just right now? मैंने जैक की तारीफ ही की, राइट? मैंने एक तरफ एक सेंटेंस बोल के उसकी तारीफ की कि ही इज अ गुड बॉय, नो, आई डिड नॉट गिव एनी डिटेल्स. और एक तरफ मैंने काफ़ी डिटेल में उसकी तारीफ की कि वो कितना अच्छा है. सो देयर इज ऑलवेज a good way and there is always a better way of doing things, of communicating, right? Let me give you another example. For example, you attend this lecture and you do not understand some part of it, right? And you have to communicate that to me, you have to speak that out. So one person can say कि कुछ समझ नहीं आया यार, I did not understand anything. ठीक है, इसी चीज़ को आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि Ma'am, I did not understand a lot of things in the lecture. Could you please explain it again? These are the things that I did not understand. I would be grateful if you can explain it again. Right? So, which one do you think is the better one? The first one or the second one?
You can respond in the question and answer chat box. You can like whatever questions I am asking, whatever you want to respond, the chat box is open. You can type there. So I think that the second way of communicating, is better. So that's the whole point, that there is a good way and there is a better, a great way of communicating. And with me, during these lectures, you will be learning a great way of communicating, right? So that's the whole point of teaching and learning communication. That's that about the basics of communication and what we will be learning. Let us get started. Let me know if you can see my screen. If you can see my screen, just type a yes in the chat box so that I know that you are there and you can see my screen. Okay, I did not receive. Okay, got it. Right. So let us start. I already gave you a brief intro of what is communication, why is communication important, and why do we communicate. We are social beings. We need to inform, we need to talk, we need to socialize, we need to know what's going around in the world. We need knowledge, we need to give advice. So because we are social beings, because we have this need for language, because we have this need to interact with others, that is why we need communication, and that is why we need to be good communicators, right? If you talk about the word communication, the word communication comes from the Latin word communicare, which means share or participate, right? It's a process through which we convey our feelings, our facts, ideas, opinions, or emotions. It's a very important part of living as a human being, right? So that is why communication is important. Now, if we talk about the types of communication, so एक टाइप तो है जहाँ पे आप दो तरीकों से कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं. देयर इज वन वे कम्युनिकेशन एंड देयर इज टू वे कम्युनिकेशन. अभी हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो अगर हम वन वे कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका सेंडर. सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है. लाइक फॉर इंस्टेंस इन दिस लेक्चर व्हेन आई एम टॉकिंग, आई एम द सेंडर. मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, जो भी मेरा कंटेंट है, मैं हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको बता रही हूँ, वो मेरा मैसेज हुआ. एंड आप क्योंकि सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हुए, राइट? सो since this is a lecture and right now this is a one-way communication, so there are three components: a sender, which is me; the message, which is my content; and the receiver, which is you, right? So that is one-way communication. Now one-way communication के क्या examples होते हैं? हम यूजुअली लाइफ में ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो करते हैं वो टू वे होते हैं, जहाँ पे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, राइट? जैसे ये लेक्चर भी टू वे कम्युनिकेशन है. कैसे? मैं आपको जो भी समझा रही हूँ, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं चैट बॉक्स में कि ये समझ आया, ये नहीं समझ आया, या फिर मैं जो भी आपसे सवाल पूछूंगी वो आप उसका आंसर दे सकते हैं chat box में. So here I am also talking to you and you are talking back to me. So this is two way. But what is one way communication? What are some examples of one way communication? If you are the audience and you are listening to a story, then that's a one way communication, right? If you are reading a book
where you are reading what the author has written. You cannot really talk back to the author, you cannot talk to the book. So that is an example of one-way communication. If you are watching a movie, that is an example of one-way communication, right? So one-way communication काफ़ी कम होता है. One-way communication का feature ये है कि उसमें feedback totally absent होता है. अगर मैं इस lecture में chat box बंद कर दूँ, आप जो भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या जो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसका ऑप्शन बंद कर दूँ, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं बचेगा, राइट? सो वन वे कम्युनिकेशन की खासियत ये होती है कि उसमें फीडबैक नहीं होता. वन वे कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है और उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर. नाउ लेट अस कम टू टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, द सेंडर, the message, the receiver and the feedback. For instance, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक मैंने जो भी समझाया क्या आपको समझ आया, और आप बोले कि हाँ समझ आया, या आप बोले कि नहीं समझ आया, तो that is feedback. So this becomes a two-way communication. Two-way communication में sender and receiver equally participate करते हैं. जितना सेंडर पार्टिसिपेट करता है उतना रिसीवर भी पार्टिसिपेट करता है फीडबैक के थ्रू. सेंडर मैसेज के थ्रू पार्टिसिपेट करता है, रिसीवर फीडबैक के थ्रू पार्टिसिपेट करता है, राइट? सो दैट इज अबाउट टू वे कम्युनिकेशन. If we talk about the characteristics of communication, so communication has a lot of characteristics. Let us understand them one by one through examples. So also one more thing, I'm being bilingual for the benefit of all students. If you want me to stick to English and not talk in Hindi, I can do that too. You need to tell me in the comments, right? So communication is a dynamic process. Now dynamic का मतलब क्या होता है? Dynamic का मतलब होता है जो चीज़ stable नहीं होती, जो चीज़ continuously change होती रहती है, right? फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपको हिंदी में लेक्चर नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे बताएं. अगर सब बोल देंगे कि हाँ मैम इंग्लिश में ही चाहिए, तो आई विल स्टिक टू इंग्लिश. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई हैव चेंज्ड द वे आई वाज कम्युनिकेटिंग. नाउ आई एम completely talking in English. So it's constantly changing. Even in the course of 5 minutes, my communication is constantly changing. So that makes it a dynamic process. Dynamic means that communication is constantly changing in response to the situation, right? Now communication is a continuous process. You may ask कि अगर मैं बोलना बंद कर दूँ और ये क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद तो हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूस कैसे हुआ? ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स भेजूंगी. अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे या ग्रुप पे मैसेज करके पूछेंगे, राइट? सो द प्रोसेस विल नेवर एंड. even if the class ends, even if I stop speaking, the process will never end, because we will still communicate in one way or the other, or whatever message I have given you, it will still play in your head, right? So communication is always a continuous process. It doesn't stop. As long as you are living, as long as you are human, it is a continuous process, right? Now communication is a two-way process. It means that उसमें मैसेज भी होता है, उसमें फीडबैक भी होता है. So it's a two-way process most of the time. Communication is pervasive. Pervasive का मतलब होता है it's everywhere and it's in every human relationship. So communication does not happen in isolation, as in you need two people to communicate, right? Even if you talk to a non-living thing, you need a non-living thing. Even if you talk to your pet, you need a pet. So communication happens between two people. Even if you talk to yourself, one part of you is talking to another part, right? So communication is everywhere. It doesn't happen in isolation. That's the meaning of pervasive. If you go to Germany, people would be speaking in German. If you come to India, people would be speaking in Hindi. If you attend this lecture, we would be speaking in English.
It doesn't matter what language people speak in, but communication is everywhere, and that is why it's pervasive. Another characteristics of communication is that it's goal-oriented. You have a specific goal in mind while communicating, right? I got up this morning, I had a goal in mind that I have to give this lecture. I have to give this lecture in 2 hours. I have to take a break in between. These are the things that I have to cover. So right now, whatever I'm speaking, that's very goal driven. I have a goal in mind that, yeah, I have to teach these things about communication to my students. So communication is goal oriented. Then communication is contextual. Contextual का मतलब इसमें हमेशा कोई ना कोई context है. जैसे for instance अभी जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे आपको कुछ चीज़ें पढ़ानी है और आपको वो चीज़ें पढ़नी है क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड या कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है हमेशा कम्युनिकेशन का. एंड द लास्ट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट it's all about sharing. Communication is a process of sharing. You can share anything. You can share ideas. You can share feelings. If I ask you, so how do you feel today? Just say I have a cold, so I feel congested. I'm sharing my feelings with you. I'm communicating this to you. So communication is all about sharing. Whether you share it with people, whether you share it with groups, it's about sharing whatever you feel and whatever information you have. So these are some characteristics of communication. Let us revise the dynamic, continuous, two-way process, pervasive, goal-oriented, contextual, and sharing. Now, let us talk about the communication cycle. The communication cycle is a very important topic, both from an exam point of view and otherwise also. ये इस पे एक क्वेश्चन आता ही है तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें. सो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? इट्स अ सर्कल, इट्स अ साइकिल. कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक साइकिल की तरह है. वो स्टार्ट होता है सेंडर से, उसके बाद आता है मैसेज, उसके बाद आती है एनकोडिंग, उसके बाद आता है चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, और वापस से फिर सेंडर पे आके प्रोसेस खत्म हो जाती है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइकिल बिकॉज इट्स अ सर्कल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो साइकिल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम थोड़ा समझते हैं, राइट? सो सबसे पहले आता है सेंडर. सेंडर से ही प्रोसेस स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन की, वहीं से मैसेज ओरिजिनेट होता है. सेंडर वो है जो मैसेज को भेजता है एक स्पेसिफिक पर्पस माइंड में रख के. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, सो आई एम द सेंडर. मेरे माइंड में ये पर्पस है कि मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है कम्युनिकेशन के बारे में, मैं जो बता रही हूँ वो मैसेज है, राइट? सो द सेंडर इज ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिकेटर. जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो सेंडर से ही स्टार्ट होती है और उसी पे आके ख़त्म हो जाती है. सेंडर का काम होता है मैसेज को या आइडिया को एनकोड करना, ये डिटरमाइन करना कि मैसेज क्या होगा, ये डिटरमाइन करना कि मैसेज कैसे भेजा जाएगा, यानी कि मैसेज का चैनल क्या होगा और मैसेज को किस तरीके से बताया जाएगा, दैट इज एनकोडिंग. तो ये सेंडर का काम होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द मैसेज. मैसेज इज बेसिकली द कंटेंट, यानी कि the idea or the emotion or the opinion or the information that the sender is sending, that is the message. Message किसी भी फॉर्म में हो सकता है. It can be in the form of writing, it can be spoken, it can be in the form of diagram. Like for instance, this is a diagram, right? This cycle, but it's still a message in the form of a pictorial or a diagram. So it can be in any form. ये किस फॉर्म में होगा वो सेंडर डिसाइड करता है. एक गुड मैसेज के भी कुछ फीचर्स होते हैं. गुड मैसेज के ये फीचर्स होते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उसमें क्लैरिटी होती है, राइट? बिना मैसेज के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अगर आपके पास कुछ बात नहीं है कहने के लिए तो आप क्या बात करेंगे, राइट? अगर मेरा मैसेज क्लियर नहीं है, मतलब अगर मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है, या मुझे ये नहीं पता कि मुझे जो बोलना है वो किस तरीके से बोलना है,
So my communication will not be effective. It will fail because my message is not good enough. It's not clear enough. I have not encoded a good message as a sender. So these are some features of message. Now the third component of the communication cycle is encoding. Encoding is the process जिससे आप डेटा या इंफॉर्मेशन को मैसेज में कन्वर्ट करते हो, मतलब एनकोड करते हो. फॉर इंस्टेंस, लेट अस टेक एन एग्जांपल. मेरे माइंड में ये आइडिया है कि मुझे एक एक्सपीरियंशियल लेवल पे अपने एक्सपीरियंस से पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता के कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे लोग उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और मुझे एज अ टीचर पता है. मुझे यही चीज़ अब आपको समझानी है, आपको बतानी है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं उसको कैसे समझाऊँ आपको, वो जो तरीका होगा या वो जो प्रोसेस होगी, यानी कि जो मेरा आइडिया है, जो मेरे पास डेटा है, वो मैं आपको कैसे समझाऊँ मैसेज में, वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग. तो आपका जो भी आइडिया है उसको आप मैसेज में कैसे सेंड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग. आइडिया जो है वो सेंडर के माइंड से ओरिजिनेट होता है और एनकोडिंग बेसिकली सेंडर के माइंड में होती है, राइट. नाउ one very important thing about encoding is that while encoding a message, the sender has to keep the receiver's ability in mind. For instance, I know French, I know Hindi, English and French, right? If I start giving you this lecture in French, will you understand? Will I be a good encoder? You will not understand because most of you don't know French. You know English or you know Hindi, right? So I have to see that as a sender, I have to see that मेरे receivers की ability क्या है, मैं उस तरीके से अपने message को encode करूँ कि उनको समझ आए जो message है, right? So basically, what is encoding? I'm explaining this in detail because students यहाँ पे बहुत अटकते हैं generally. So encoding is the process of converting an idea or data into a message. Encoding should be such कि वो रिसीवर की एबिलिटी को ध्यान में रख के की जाए. एंड अगर आपकी एनकोडिंग क्लियर नहीं होगी तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होगा, राइट. एनकोडिंग ऑफ कोर्स आल्सो कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव टू गिव यू अ मैसेज, ठीक है, इफ आई हैव टू से दैट आई लव माय स्टूडेंट, I can speak and say that I love my students, or I can also do this. So that's sign language, right? That's me hearting you. So that's also one way of encoding. It can be in the form of verbal signs or non-verbal signs. That depends on the sender and the receiver. Now, the next component in the communication cycle is the channel. चैनल इज बेसिकली वो पार्ट जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है. चैनल सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, इस केस में अभी हमारा जो चैनल है वो वर्चुअल है, राइट. मेरे सामने एक लैपटॉप है, आपके सामने फ़ोन या लैपटॉप है, और हम जिस चैनल से कनेक्ट कर रहे हैं वो वर्चुअल है, राइट. अगर कोविड नहीं होता तो हम जिस चैनल से कनेक्ट कर रहे होते वो फेस टू फेस क्लासरूम होता, राइट. अगर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो यू हैव लाइक अ फेस टू फेस चैनल. अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो द टेलीफोन बिकम्स द चैनल. इफ यू आर sitting next to someone and talking, then air and sight become an important channel. So basically आपका जो आइडिया या जो मैसेज है वो किस डिलीवरी मेथड से डिलीवर हो रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है रिसीवर के पास, दैट इज कॉल्ड द चैनल, राइट. चैनल की चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में. वाई? फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे घर पे नेटवर्क ख़राब है, मेरा वाईफाई अगर ख़राब है और उसकी वजह से क्लास बहुत अटकती है या वीडियो फ्रीज हो जाता है, तो आपको लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन अभी हो रहा है जितनी स्मूथली वो इफेक्टिव हो पाएगा? वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा बिकॉज स्क्रीन अटकेगी, आप इरिटेट होंगे, मैं इरिटेट होंगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा. तो बेसिकली यहाँ पे इवन इफ द मैसेज इज गुड, इवन इफ द encoder is good and the encoding is good, the sender is great, the receiver is great, but the channel is not so great, the communication will fail.
So channel is a very important part of communication, right? Now the next component in the communication cycle is the receiver. Receiver is the person who receives the message. इस केस में आप रिसीवर हैं. अगर मैं बोलती हूँ जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो आई बिकम द रिसीवर बिकॉज आई एम एट द रिसीविंग एंड ऑफ द फीडबैक. रिसीवर का काम होता है डिकोड करना. जैसे सेंडर ने एनकोड किया कि इस मैसेज को मैं कैसे पहुंचाऊं और मेरा मैसेज क्या है, वैसे ही रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है कि ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे समझूं या कैसे इंटरप्रेट करूं, राइट. सो डिकोडिंग अब डिपेंड करती है कि रिसीवर की क्या एबिलिटी है, राइट. आपने चाहे कितनी भी अच्छी एनकोडिंग क्यों ना की हो और आपका मैसेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप का जो रिसीवर है वो ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन फेल होगा, बिकॉज रिसीवर को किसी भी वजह से समझ नहीं आया, राइट. उसकी या तो एबिलिटी नहीं है उतनी समझने की, या तो जिस तरीके से आप समझा रहे हैं वो तरीका उसका नहीं है समझने का, राइट. So decoding completely depends on the receiver and the receiver's ability to interpret or understand the message. आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला क्या समझता है वो भी उस पर डिपेंड करता है, राइट. सो जैसे कम्युनिकेशन में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप्स में. यू से समथिंग बट किसी को बुरा लग जाता है एंड यू डिड नॉट मीन इट दैट वे बट द अदर पर्सन अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे. वाई? बिकॉज वहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग का डिफरेंस है. आपने कोई बात बोली, आपका इंटेंशन अलग था, आपने अलग तरीके से एनकोड की, लेकिन किसी ने और तरीके से समझ ली. तो there is a gap between the encoding and the decoding, right? The decoding depends on the receiver. Now the last and the most important, if anybody asks you what's the most important part of the communication cycle, that is the feedback, the last stage of the communication cycle. So feedback is basically the reaction or the response of the receiver. जैसे for instance अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी तक मैंने जो समझाया सब समझ आया और आप बोले कि हाँ हाँ समझ गए, तो ये फीडबैक है आपका, राइट. सो फीडबैक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन साइकिल में? बिकॉज फीडबैक से ही पता लगता है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल भी हुआ या नहीं. अगर मैंने आधा घंटा बोला तो अगर वो किसी को समझ नहीं आया आधा घंटा बोलना, तो मतलब वो आधा घंटा बोलना बेकार हुआ, राइट. अगर किसी को समझ ही नहीं आया, अगर मैंने जो मैसेज दिया वो किसी को रिसीव ही नहीं हुआ, that means my communication was a failure. How do you know whether your communication was effective or a failure? You know it via feedback. Feedback is very important. So if you notice in different areas of your life, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक फॉर्म देती हैं. डीओ में नहीं होता है लेकिन आईआईटीज़ में होता है. हर क्लास के बाद स्टूडेंट्स को या हर सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म मिलता है जहाँ पे वो प्रोफेसर को फीडबैक देते हैं, राइट. आप जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके पास मेल आता है कंपनी की तरफ से कि आपको खाना कैसा लगा, हमें रेटिंग दीजिए प्लीज़. आप ऊबर से ट्रैवल करते हैं तो ऊबर वाला बोलता है कि आप रेटिंग कर देना. तो वो रेटिंग क्या है, वो क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं आपको रेट करने के लिए? आप जब कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो वो क्यों आपसे बार बार रेटिंग पूछते हैं? क्योंकि आपकी रेटिंग उनके लिए फीडबैक है, राइट. जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे उनको समझ नहीं आएगा कि वो सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं. दैट इज़ वाई फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल एज वेल, बिकॉज फीडबैक से ही पता लगता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ या नहीं, राइट. सो दैट इज़ वाई फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है मे बी. So let us look at some advantages and some disadvantages of feedback. Feedback के advantages हैं कि feedback से पता लग जाता है कि मैसेज चला गया है, right? For instance, आप किसी को कोई फाइल स्कैन करके भेजें या कोई फ़ोटो भेजें व्हाट्सएप पे और फिर उसको कॉल करके पूछे कि मैंने जो फ़ोटो भेजी थी वो मिल गई, और वो बोले कि हाँ मिल गई, मैंने देखी. सो दैट इज़ फीडबैक, राइट. ये कंफर्म हो गया कि आपका मैसेज पहुंच गया है. सो फीडबैक से कंफर्म हो जाता है कि आपका मैसेज पहुंच गया है.
फीडबैक का ये एडवांटेज है कि अगर आपको कोई डाउट है, कम्युनिकेशन साइकिल कैन बी ब्रोकन, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इट कैन बी ब्रोकन एनीवेयर। कभी चैनल खराब हो सकता है, कभी मैसेज खराब हो सकता है, एनकोडिंग डिकोडिंग में ट्रैप हो सकता है, तो डाउट्स तो आएंगे, राइट। तो जब आप फीडबैक के लिए पूछते हैं तो रिसीवर को एक मौका मिल जाता है अपने डाउट क्लियर करने का, और उससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव रहती है। उससे ये भी पता लगता है कि सेंडर ने जो बोला उसमें रिसीवर इंटरेस्टेड भी है या नहीं, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस लेक्चर के बाद, तो आई वुड नो दैट या यू वर इंटरेस्टेड इन दिस लेक्चर, so that's a feedback for me and that's very important. फीडबैक से आप नेसेसरी, जैसे अगेन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने पूछा कि क्या मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ या मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँ। अगर आप जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से मैं अपने मैसेज में चेंज करूँगी, राइट। आई चेंज द लैंग्वेज ऑफ माई मैसेज। सो फीडबैक से सेंडर को ये पता लग जाता है कि उसको मैसेजेस में कुछ चेंज करना होता है फॉर मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Feedback also encourages interactive communication, and interactive communication is very important because otherwise it's boring, right? Like sometimes even I feel a little bored just talking and not being able to, interact with you face to face. I wish that you could sit on your cameras, or I wish that I could talk to you, hear your voice, um, because that's more interactive. Here we are interacting through the chat box, and that's why I keep saying that use the chat box. Give me feedback. Say yes or no if you can see my screen. Tell me whether you understand. If you have a doubt, ask me. So that part is very important. That feedback is very important because that will make the communication interactive, right? And the most important thing, feedback completes the communication cycle, क्योंकि वही last stage है साइकिल को कम्युनिकेट करने का, राइट। So these were some advantages of feedback. Now let us come to the functions of communication. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, so we'll just briefly go over it, and after that if you have any doubts you can ask me. And with this we'll be completed with one of our units. So let us look at the functions of communication. पहला फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेटिव, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन विद अदर्स। फॉर इंस्टेंस अगर गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन लगा देती है, राइट, तो मीडिया वाले आपको बताएंगे कि दोबारा लॉकडाउन लग गया है, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सो दैट इज द इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. Communication has a directive function where you have to give instruction to somebody. For instance, if I tell you that communication cycle is very important in this unit, and pay special attention to this topic, I'm directing you, I'm advising you, right? So I am communicating to you that this is important, and that's where I'm directing you. So communication has a directive function. Advisory function. We all give and take advice, right? Advice is probably the most popular form of communication. Everybody loves giving advice. Nobody applies their own advice on themselves. So communication has an advisory function where communication is used to give and take advice. Communication has an educational function. If we cannot communicate, we cannot educate each other, right? If I know something and if I tell you, I am educating you, right? So communication has an educational function. Communication has, interestingly, a persuasive function. Now this is very interesting, and I'll explain this with the help of an example. So you can use communication to influence people, right? For instance, why does everybody like Mr. Modi? Because he is a very persuasive communicator. He's a great orator. He's a great communicator, right? He can persuade the masses to follow the lockdown, which was surprising because we as a country are not disciplined. So if everybody is staying in their houses, which they did in the initial part of the lockdown, it was because
The government was very persuasive enough. I'll give you another very interesting example. So, for instance, if you have to go for a trip, right? You go to your parents and you try to persuade them. How do you do that? You say, please let me go. I'll behave well. Please let me go. I'll get really good marks this semester. Please let me go. All my friends are going. I don't want to feel left out. So you use different ways to persuade your parents to let you go on a trip, and that is where the persuasive function of communication comes in. So you can use communication to persuade, influence people, and that is what makes communication very, very interesting and very, very important. Because if you can influence people, you can get what you want, right? If you can influence your parents to let you go on a trip, you go on a trip. If you fail, you don't go on a trip, right? So that enables you to get what you want, and that's why it's important. Communication has an interactive function. It allows us to interact with each other. If you did not talk to anybody, you would go crazy, right? That is not how we are designed as human beings. We need to talk to people. We need people to talk to us. So communication has an interactive function, whether in formal or social or informal settings. Communication also has an organizational function. Uh, Organizations, big, large companies, big colleges, big universities cannot run without communication. It was communicated to me today that I have to take a class at 10 p.m. Right? So that is how I'm taking this class. The university is an organization. They have to use communication to inform each other of things. So communication has an organizational function as well, right? So with this, we are done with the first unit of AECC. That was the basic first chapter, where we studied about the functions of communication, and we studied about the components of communication, the communication cycle, and the classification of communication into one-way and two-way communication, right? Okay. Now what we are going to do is we are going to take a short break of 12 minutes. Yeah, it's 10:48 right now, so we will meet at 11 o'clock. Take a break, go to the washroom, eat your food, whatever you need to do. In the meantime, if you have any doubts, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, वो आप पूछें, and I'll try to answer as many doubts as I can. I'll see you in 10 minutes at 11.